हम एलिपी पहुँचे फ्रॉम वर्कला आफ्टर अ 3 आवर ट्रेन जर्नी। और जिस रात हम पहुँचे बहुत बारिश हो रही थी। एंड आफ्टर सम हसल वी डिसाइडेड टू स्टे एट दिस रॉयल हॉलीडेज होम स्टे। So there are different rooms, 1, 2, 3 and this one is our room. ये पूरा कमरा है and you have the view of the canal from the window। और यहाँ पे सारी हाउस बोट शिकारा यहाँ से मिल जाता है। This is the entrance of the होम स्टे। और यहाँ गेट से जब आप निकलते हैं तो ये वाटरवे है एकदम ठीक सामने। सम हाउस बोट्स। ये 2 रूम्स भी हैं इनके पास विच आर राइट नेक्स्ट टू द वाटरवे हियर। वी आर स्टेइंग अपस्टेयर्स बल्कि इनसाइड, ये बहुत पास हो जाता है। और ये जो रास्ता है दिस इज़ ओपन फॉर पब्लिक। आई एम सो ग्लैड कि हम लोग को ये लास्ट मिनट मिल गया। जो पहले हम लोगों ने बुक किया था वो बहुत ही पैथेटिक हम लोग का एक्सपीरियंस था उस वाला होम स्टे के साथ। मलयालम रिजॉर्ट्स करके है नाम उसका। मैं बेसिकली जो रूम उन्होंने हमें दिया था उसका जो वॉशरूम था इट डिड नॉट हैव हाफ ऑफ द रूफ। सो रात में जब हम लोग पहुँचे हैं वी हैड टू क्विकली लुक फॉर अनदर होम स्टे बिकॉज वहाँ पे तो नहीं रुक सकते थे, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। सो इंस्टेंटली वी बुक्ड दिस होम स्टे विच इज़ नोन एज रॉयल हॉलीडेज़ होम स्टे। और उन्होंने फिर हमको बहुत अच्छा सा रूम भी दिया, सबसे बड़ा वाला जो रूम था वो वाला दिया। ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो included, so it is very very cheap, around 1200 per night plus taxes and breakfast। और AC भी है, AC का cost would be a little more। So this is in front of our homestay, this is the shikara boat, that is the houseboat over there। And the cherry on the cake were these cute little cats जो कि इसी homestay में थी। And our host auntie and uncle, auntie specifically was very happy to see us petting her cats as well। This is our breakfast at the homestay, idli with sambar and chutney। After enjoying our breakfast of simple idli sambar chutney along with some great filter coffee, हम लोग निकल गए अपने पहले स्टॉप के लिए जो कि था रेवी करुणाकरन म्यूजियम। सो वी हैव रीच्ड द रेवी करुणाकरन मेमोरियल म्यूजियम। दिस इज बिहाइंड मी, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टॉप इन एलेपी। So we just visited the Revi Karnakaram Museum। Revi was a choir manufacturer and trader। So उनके मेमोरी में उनकी वाइफ और बेटी ने ये म्यूज़ियम बनाया है। ऑफ ऑल द कलेक्टिबल्स इट हैज़ गॉट द लार्जेस्ट आइवरी कलेक्शन जिसके ऊपर कार्विंग्स कर रखी हैं आइवरी के ऊपर। क्रिस्टल कलेक्शन इज़ ऑल्सो देयर। सो यू कैन डेफिनेटली कम हियर टू दिस म्यूज़ियम एंड इट टेक्स अराउंड 2 hours to see all the collections which are here in the museum। After visiting the museum, we straight away went for lunch at this place called as Thaf, and it has a huge variety of Kerala cuisine along with a lot of seafood options। On our way back, the auto guy gave us this pamphlet जिसमें 7-8 sightseeing के options थे, which he said that he can cover in 1500 rupees in a single day। So these are houseboats with AC and rooms available inside। तो ये देखिए हाउस बोट्स के अंदर प्रॉपर वॉशरूम, सिंक, देयर अ किचन एट द बैक ऑल्सो एंड देयर आर रूम्स। सो मोस्टली पीपल दे डोंट गो टू होटल्स इट सीम्स। सो नाउ फॉर द मोस्ट अवेटेड अट्रैक्शन ऑफ एलेपी वी आर गोइंग फॉर अ शिकारा बोट राइड। ये देखिए ये हाउस बोट्स हैं छोटी वाली, बहुत सारी हाउस बोट्स आ जा रही हैं इसी रूट पे। सो दिस रूट इज़ गोइंग फर्दर टू वेम्बनाड लेक, दैट इज़ द डबल डेकर हाउस बोट पीछे जो है। सो वी आर गोइंग फॉर अ सनसेट शिकारा राइड। इट विल कॉस्ट फ्रॉम समवेयर बिटवीन 600 to 700 पर आवर। 3:30 से 6:30 तक का सनसेट राइड होता है। सो इट विल कम टू अराउंड 2000 rupees। They're all going towards the Vembanad Lake which is over there that side। there is also a small island पे migratory birds भी रहती हैं। so देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। all those So
This is the point where the boat race starts from. When is the boat race? August. August second Saturday, 3 o'clock starting. Okay. So there are a lot of views which you will have of the backwaters. On both sides you will find small islands जहाँ पे villages बसे हुए हैं. रास्ते में कनू चलाते हुए भी लोग दिखे थे, so that is also one of the things that you can do over there. And other than that, the locals were also using their own boats और भी छोटी boats थी to help people go from one island to another island. So these are all villages next to the lake. And there are restaurants also on the sides. यहाँ पे रुक के आप कुछ खाना वाना भी खा सकते हैं. वो देखिए लाइन से हाउस बोट्स आ रही हैं. 1 2 3 4 5. क्या विचार हैं आपके? I think houseboats are waste. They spend so much of energy just driving around 2 or 3 people maximum. Luxury houseboats are taking up too much of diesel, and there are generators, air conditioners which are there, and only 2 people are traveling in such big boats. So it's such a waste of energy, money. Houseboat traffic jam. अब हम जा रहे हैं कुछ चाय पीने के लिए. This restaurant. Village sides हैं, सारे घर हैं. And they serve food. They have their own canteens, small canteens. तो इस तरीके की कैंटीन्स हैं यहाँ पे. चाय, लंच, नाश्ता, टी, कॉफ़ी, नारियल पानी, ये सब मिलता है यहाँ पे. Right next to the backwaters here. तो हाउस बोट वाले यहाँ पे आके रोक देते हैं, and then you can have your refreshments. And after having our tea, I met 25-year-old Ramakrishna. Ramakrishna, Ramakrishna, oh Ramakrishna. देख रहा है मेरी आँख में दर्द तो नहीं है. Ramakrishna, उधर देखो, उधर देखो. Touch. I can touch? Saying bye bye to Ramakrishna. In between, you're also going to find these local ferries which are taking passengers at a very cheap cost from one point to another, and these are the local jetty stops. Now entered the Vembanar Lake. ऐसे खुल गई है पूरा, यहाँ पे जो कनाल है वो पूरी खुल गई. As we were entering the lake, जो सारी बड़ी बड़ी house boats थी, they were going back towards the jetty point to be parked for the night. So ये पूरा Vembanar Lake का expanse. मज़ा तो बहुत आ रहा है. डॉक्टर साहब, आपको मज़ा आ रहा है? ये फ्लोटिंग वेजिटेशन पूरे टाइम आपको दिखेगी. जब नैरो वाली कनाल में जा रहे थे तब काफ़ी सारी हाउस बोट्स एक साथ ट्रैफिक जैम, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि पूरा वेम्बनाड लेक खुल गया है एकदम. सो नाउ इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद द होल स्काई. As we entered the lake, our boatsman also helped us to identify the Padiramanal Bird Sanctuary Island. From far away we could see it. It is a large island where the migratory birds come for nesting. Almost 2.5 hours from Alleppey to reach this island.
This sunset shikara ride will always be there in my memory because it was one of the most beautiful experiences. As the sun went down, we turned our boats and started going back towards our homestay. In between, there were several houseboats which had already parked for the night. So the temple festival has started today here at Alleppey. तो ये सब सजा हुआ है टेम्पल के entrances. There must be some temple up there. और यहाँ पे सब market है on the road side. Fruit halwa. After taking a look at all the festivities during the temple festival, we went towards our dinner stop, which was this cafe known as Beirut Bistro, and it was serving one of the best Mediterranean cuisines, so we tried that, and that's how our day ended. This boy sitting outside. अगली सुबह सारी हाउस बोट्स वापस लेक की तरफ जा रही थी और हमने सोचा कि हम थोड़ा सा होम स्टे का ही एरिया एक्सप्लोर करेंगे. सो हम आज की सुबह निकल गए हैं कोकोनट ऑयल कैसे बनता है उसकी फैक्ट्री में. सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी दैट. Although at the factory the machines were not working at that time, but the person working over there gave us a small brief of how the pure coconut oil is prepared at this factory. और जितना भी बचा हुआ कोकोनट का residue होता है, that is also used as cattle feed, and the oil was costing around 300 rupees for 1 liter of this pure coconut oil, which didn't have any additives or preservatives. It smells good also. Smells good. So there are many pay and park here in this lane which enters into our hotel. So we saw this coconut oil factory, and now there is another factory which makes handloom sarees. They have the loom also, so you can come here and see how the Kasavu sarees are made through the handloom. Before we even entered the factory, we could hear the looms clanking. So this is the golden thread. This is the silver thread. Silver, golden and blue thread. And this is how they are spinning the yarn. Okay, so the plain one is 750 and the one with the golden pallu with booties is around 1600 here. After visiting the handloom factory, we went to the choir museum, which is a little far from the main town. So the auto charge is very expensive here. It's around 30 rupees per kilometer. तो अगर आप कहीं दूर आ रहे हैं सिटी से तो 30 rupees per kilometer है Alleppey में ऑटो का चार्ज. Just now we have reached the choir museum, international choir museum, और यहाँ पे अंदर जाके देखेंगे कि choir से कुछ इन्होंने आर्ट वर्क किया है. The museum had a little history about Alleppey and how it developed, and also how the choir industry and the first factory was set up within Alleppey. In the beginning only there are several artworks which are made out of choir. So this is how the choir is made. Coconut जो सूख जाता है उसके शेल को फाड़ के इसका हस निकाल के फिर ड्राई करके देन ये जो रोप है वो बनाई जाती है. And then there were several machines which were initially used for producing different products out of choir. These are basically looms. सब tools रखे हुए हैं इधर.
आई थिंक पैर से इसको चला के, ये बड़ी लूमिंग मशीन्स हैं। ये यहाँ पे पूरा कॉयर का कार्पेट वीव किया जाए तो ये सब यार्न्स लगे हुए हैं, थ्रेड के स्पूल्स लगे हुए हैं कॉयर पे, बेड से होते हुए यहाँ पे इसको सीधा किया जा रहा है और फिर इधर वीव हो रहा है। ये वाले जो यार्न है इनको डाल डाल के, जैसे साड़ी बीनी जाती है वैसे ही बिन के, दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट। वो देखिए वो कलरफुल वाला जो जूट का यार्न है, उस तरीके का पैटर्न बनता है, इस तरीके का पैटर्न जूट का मैट। सो हम लोग क्वायर म्यूज़ियम घूम के आ गए हैं और उसी के जस्ट ऑपोजिट ये क्रीम कॉर्नर गार्डन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लंच करने की सोच रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड। नाइस गार्डन ऑल्सो अराउंड दिस एरिया, नाइस प्लेस, वेरी ओपन ग्रीन। इतनी धूप है लेकिन यहाँ इतना ठंडा अच्छा लगता है। As the evening progressed, it was time to go to the Alleppey beach. So हम लोग अभी Alleppey बीच पहुंच गए हैं और यहाँ पे सारे फूड के स्टॉल्स हैं and there is the beach. So यहाँ पे जो पियर है ये 150 ईयर ओल्ड है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये Alleppey का मेन फीचर है। इट हैज़ बिकम कम्प्लीटली रस्टेड, 150 साल पुराना ये पियर है। Today we are going to be leaving Alleppey और यहाँ पे जो होम स्टे है उसमें इन ग्रैंडमदर की डेथ एनिवर्सरी का फंक्शन है, so they were so sweet that they were also inviting us for lunch. This is what the homestay looks like from the entrance. यहाँ पे गेट है और उस तरफ गार्डन है, it's the beautiful garden here. There is also this small little temple very close to the homestay. ये देखिए हमारी किस्मत, we got to eat lunch here. So after enjoying our delicious lunch spread, we said our goodbyes to both uncle and auntie and left for the railway station where we were going to catch our train to go to Cochin that day. While at the station, I saw this cute little shikara and I instantly bought it to remind me of that beautiful sunset ride we had. So this is the end of the video. Hope you liked this video. If you did, do like and share it with your friends and family and subscribe to my channel as well.